So what I did was I did a very stupid thing. I thought कि इसको खोलते हैं, उसको उसमें देखते हैं कि क्या होता है, right? So I opened it up in the night and I saw कि कुछ wires missing थी उसमें. So I thought कि just plug कर देते हैं and शायद performance बढ़ जाएगी. And I did it and I closed it and I started it and it was like boom, it was gone. And अब आवाज तो बहुत तेज होती है and everyone like in my family heard it and they saw कि कुछ तो हुआ है and they came running towards me and they said कि क्या कर दिया ऐसा वैसा. उस टाइम बहुत बोला था मम्मी ने मेरे में, but that was he was the one person who believed in me, right? He was like कि कोई बात नहीं, हो जाता है. And later he bought me a new laptop on my birthday. Hi everyone, I hope you are doing very well. So it has been a long journey since I am having a conversation with many of the startup founders, and in the same series of startup talks, I have Shubham Rawal with us. He is the co-founder of StockPay. So hi Shubham, how are you doing? Hey Harshita, thank you so much for bringing me on to this podcast. So I'll start with my intro. Hi guys, this is Shubham Rawal. Just a correction, I'm the founder and CEO of Software. Okay, right. And I have been developing apps and websites since I was like 13 years of age. I have a diverse background in software development, management, tech consultancy, HR tech, and I have been involved in various initiatives which help non-tech people start their development journey. So till date, we have placed roughly around 100 people from a non-tech background, like BCom honors and MBA and these guys. I've been investing since close to like 5 years, I guess. I started my trading journey when I was like close to 2017, I guess. It was a hard thing for me in the initial days, and that's how I eventually built up my finance learning, and everything that I know about finance has been in those broad 5 years. So yeah, that was about me. Great, Shubham. Thank you for introducing yourself to our audience. So I would like to start from the starting. As you just said that you started investing since 5. Well, you started learning about it, then eventually investing out. So how was that journey of actually of a 5-year-old kid learning about investing and then now building a platform out of it? So I guess it was quite interesting for me as well. Being a curious child, being coming from a middle class background, you know how things are. Family में it's always about no money or less money, right? You're always crying about ये दिला दो, वो दिला दो. So at that time, they were my friends in my neighborhood, and they used to play with toys, right? And I was pretty good in what say चीजों को जोड़ने में बहुत अच्छा था मैं, and those guys were like good in breaking them down, right? Okay. So I was very fond about electric motors and stuff, circuit board and everything else, antenna वगैरह वाली सारी चीजें. So some of the kids broke their toys and they were like shouting to their parents, ये दिला दो, वो दिला दो, just like a kid do, right? So at that time I was just curious enough कि लाओ मुझे दो, I will check it out and I'll see what can be done or what cannot be done. So everyone said to me कि ये नहीं होने वाला है, खराब कर देगा और ज़्यादा. I have a reputation in my neighborhood कि ये खराब कर देता है चीज़ें. Just because I was so curious about everything, right? So I started assembling it. I saw कि 2-3 तार जो wires होती हैं वो टूटी हुई थी, and I just like plugged it in, चला के देखा, and it went work well, right? So I used to charge some rupees, like 1, 2 or 3 rupees from these children to fix their things, right? And so that was my primary income at that time. और उसी से सब कुछ start हुआ था, like save करना and कुछ खरीदने जाके. And I guess that built my reputation कि ये fixer है, he's a builder, right? I'm not a guy who breaks down things. So fast forward to a couple of years back, I started learning about computers and stuff. So I was in 10th or 11th standard at that. 10 or 11 years of age. I started
thinking about what computers do and how they work and everything else. So at that time, my dad was also being involved with me and saw कि अच्छा लगता है इसको कंप्यूटर वगैरह. Let's bring something for him. So he bring a very old desktop for me. And वही curiosity की वजह से वो खराब कर दिया मैंने मस्त मिडिल में. And my mom beat the shell out of me. She was like कि कैसे कर सकता है तू ये क्या कर दिया वो कर दिया. But my dad supported me. Desktop. Yeah, so what I did was I did a very stupid thing. I thought कि इसको खोलते हैं, उसको उसमें देखते हैं कि क्या होता है, right? So I opened it up in the night and I saw कि कुछ wires missing थी उसमें. So I thought कि just plug कर देते हैं and शायद performance बढ़ जाएगी. And I did it and I closed it and I started it and it was like boom, it was gone. And अब आवाज तो बहुत तेज होती है and everyone like in my family heard it and they saw कि कुछ तो हुआ है and they come running toward me and they said कि क्या कर दिया ऐसा वैसा. उस टाइम बहुत बोला था मम्मी ने but dad was he was the one person who believed in me, right? He was like कि कोई बात नहीं हो जाता है. And later he bought me a new laptop on my birthday. I guess that was a turning point in my life. He introduced me to a concept of computers, then languages come, then gaming came, and I guess अगर मेरे dad ने उस time मना कर दिया होता कि नहीं तो खराब कर दे सारी चीज़ों को, so we were looking at a different Shubham that is available over here. So yeah, that was my journey in my childhood. Post which I guess after the computer came in my life, my journey accelerated. I started figuring out things on my own. I started Googling stuff. A lot of people today don't Google about anything, right? If you saw the trend ना, if you go on Google Trends and saw कि कितने लोग पूछते हैं कोई चीज, the amount of how typed on Google is very low, right? Just because everyone thinks they know everything, right? And that's the biggest misconception this generation has. A lot of people just don't want to get bothered. ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, right? So whenever I talk to founders, one of the things I deeply admire about them is they're very curious. They're like a 13-year-old child or kid, right? They want to learn and वो छोटी से छोटी चीज़ भी गूगल करेंगे या पूछेंगे किसी चीज़ से कि भाई ATM से पैसा कैसे निकालते हैं या पिन कैसे चेंज करते हैं. If they don't know it, they don't know it. It's not something कि it's to be ashamed of, right? So they go and they start googling stuff, पूछेंगे कुछ भी करेंगे, and I really admire that thing. I'm very fortunate enough कि वो curiosity, that level of curiosity is still inside me from my childhood. That I talk with different people. That I do Google a lot. कि ये नहीं चल रहा है इसको कैसे करते हैं. How to build a team, just Google it, right? Or how to raise money, how to do things. So I think that is a very underrated thing among various people that are currently trying to do something. In that journey only, I started learning about. I started programming basically. So it was just in my mind कि computer कैसे चलते हैं. Like there has to be a basic element to it, just like life. There are fundamental elements, right? So for a computer, it should be a basic element. Either it's 1 and 0 binary language, or other language. So मुझे पता चला. I started figuring out again. I talked to my teachers about कि कैसे चलते हैं computer. They told me about the binary language, कि 1 और 0 की language चलते हैं. Then later on, people created more languages out of it. So again, out of curiosity, I started figuring out. I started googling around, and at that time, my dad also introduced me to internet. So the first thing I did was create a FB account. Right? Yeah, so I was like very curious कि ये कैसे चलता है, सब कुछ चलता है. तो Facebook account बनाया and उसके थोड़ी देर बाद में बोर हो गया उससे. Like in a couple of hours, I was like bored. ये कुछ नहीं होने वाला उससे. Again, I went to googling and I started figuring out कि और क्या क्या कर सकते हैं, right? तो जो मुझे मन में आता था ना, मैं वो गूगल कर देता था. Like legit anything. So how computer run, उससे पता चला कि binary language होती है, फिर उससे और पता चला कि और languages होती हैं, which is C, C++, Python and everything else. So I started developing in C++ when I was like 12 or 13ish. I started creating apps and websites at that time, and it was like even before you entered college, you started doing this. Right. So I was in 8th standard at that time. 8th standard. In school. Right. So अब स्कूल में हल्ला मच गया कि so I used to make good presentation. अब क्या होता था कि स्कूल में जो Microsoft Office यूज होता था, that was like 2007. Microsoft Office 2007 version यूज होता था, and I was using Microsoft Office 2022.
So Microsoft create these versions just to beta test it. And I used to enroll them और मैं उसको चेक करता था. And I used to bring beautiful presentation in school. And जब भी हमारी क्लासेस होती थी presentation में, people were like, ये कहाँ से ले आया है, ये तो है ही नहीं 2007 में. Right? So it was something fascinating for many people कि ये कैसे कर लेता है सब चीजें. Right? But deep down, if you know, it's always about the curiosity और जो hard work था. मैं literally 9-10 घंटे लैपटॉप पर बैठा रहता था. If you're seeing this specs, it's because of that only. तो मैं पूरा बैठा रहता था दिन में, and I used to figure out things on my own. ऐसे प्रोग्रेस हुआ धीरे धीरे करके, and I started my first venture when I was like 15. 9 खत्म होने वाली थी and 10 स्टार्ट होने वाली थी. मैंने ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड किया. आई सॉ डिमांड एंड सप्लाई थिंग. मुझे कुछ नहीं पता था बिजनेस के बारे में उस टाइम पे. I always saw one thing कि there is an increased demand on online thing. रिटेलिंग में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फ्लिपकार्ट और आपका अमेजोन उस टाइम पे बूम हो रहा था धीरे धीरे. शॉप क्लूज था अगर आपने नहीं सुना हो तो that's where I saw कि there is an increase in online demand. People want to buy things online, right? And another side of story was there were people who wanted to sell things online. Right? Now there are like tons of apps, Meesho वगैरह सब लोग यही कर रहे हैं, correcting sellers, right? So I did a very basic, more complicated, yeah. तो मैंने बस सिंपल मॉडल लिया. मैंने हाउसवाइफ को कनेक्ट किया अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, and I used to deliver the products. मैंने अपना पहला वर्जन लॉन्च किया अपने स्कूल में, and people were like शेट कि ये क्या कर दिया, ये वेबसाइट कैसे बना दी तुमने, right? And for me it was a normal job, right? यार ये तो इजी तो है, तू भी बना सकता है, ये बना दे. So I always have this thing कि I wanted others to learn as well, right? If I am upscaling, if I am growing, I want other people to grow as well, my friends or other people. But later I realized that it's not happened that way, right? Either you grow with them or you outgrow them. So in any story of my life, I always outgrow people if they are not willing to change themselves for a greater good, right? I always believe in saying that if I want to achieve something, if I want to create impact, I have to do something that many people are not doing. Right? That was my main thesis. So we were profitable. लोग order भी करते थे, and I used to मैं स्कूल छोड़ता था 3:30 बजे, हमारा स्कूल खत्म होता था. मेरे डैड मुझे घर छोड़ देते and मैं निकल जाता था बैग लेके, सब कुछ सामान पैक करके ऑर्डर देके, and मैं सबको पैदल ही डिलीवर करता था. उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि मेट्रो वगैरह में भी करे जाए, राइट? तो आई थॉट कि इसको बड़ा करते हैं. तो हमने उसको नीचे किया, टेक डाउन किया, एंड स्टार्टेड बिल्डिंग अ सेकंड वर्जन ऑफ इट फॉर मोर स्केलेबिलिटी एंड मोर कैटेगरीज, राइट? So I started going out to different retailers in my area. So I live in Patel Nagar, and there were like many people around here wanted to sell different things over internet. So I proposed them. मैं PPT लेके जाता था, अपना लैपटॉप कैरी करता था साथ में उस टाइम पे. And people were like कि तुम तो बच्चे हो, तुम स्कैम तो नहीं कर दोगे. And I was like कि तुम तो आप तो इतनी बड़ी दुकान चला रहे हो, आप कैसे स्कैम हो सकते हो. तो कुछ रिटेलर्स ऐसे करते थे कि दे वर लाइक कि नहीं हमें नहीं बेचना, हमें तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम फ्रॉड कर दोगे. सम रिटेलर्स आर लाइक कि वो खुद ओनर होते थे और मुझे बोलते थे कि ओनर नहीं है, बाद में आना, एक हफ्ते बाद आएगा ओनर, एक महीने बाद आएगा. जस्ट बिकॉज people don't have this trust at that time, right? जितना उनको अभी है ऑनलाइन रिटेलिंग वगैरह. But eventually some people, some dealers over here wanted to get, they were very desperate कि मुझे भी आना है, मुझे भी ऑनलाइन बेचना है सामान. So we onboarded them. We started the delivery of different mobile phones, TVs. So one of our first client was our own school. हम लोगों ने अपने स्कूल को कुछ टीवी बेचे, but just because we didn't know about the law, we didn't know about anything, right? How contracts are made, how everything was made. So we were facing a lot of issues regarding process forming and managing different things, right? And that was the time we were like कि या तो इसको नहीं बंद करना पड़ेगा या तो हमें और पैसा चाहिए, right? So my friend जो मेरा पार्टनर था उस टाइम पे, he asked his parents for 25,000 rupees. A 10th class student asking his parents for 25,000 rupees to build something that we don't know is going to work, and they don't know कि चलने वाला है, क्योंकि उनको बच्चों को अपने विश्वास नहीं है. But they still gave it out of love, right?
हमने इंफ्यूज किया कैपिटल, हमने जो फ्री चीज़ों पे चला रहे थे हमने उनको पेड पे शिफ्ट किया. बट लेटर वी सॉ एंगेजमेंट वगैरह थी वो गिरती जा रही थी जस्ट बिकॉज मार्केट नहीं करते थे एंड देयर वाज ओनली अ स्कूल जो हमारे वो था टारगेट ऑडियंस उस टाइम पे. तो इवेंचुअली वी थॉट कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, वी शुड बंद कर दो इसको एंड वी शुड रिजॉर्ट बैक टू स्टडी एंड देन डू समथिंग एल्स. तो हमने कहा ठीक है, तो हमने उसको टेक डाउन किया. एट दैट टाइम मेरी स्टडीज बहुत इम्पैक्ट होती थी जस्ट बिकॉज आई एम नॉट रियली अ गुड फैन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. Like I think what everyone is teaching right now, it's very outdated, it's very boring, and it's of no use, right? That's why I resort to upskilling. That's why I resort to helping people ki upskill karo with a relevant thing, right? So my school, I was in 11th, I guess. It was starting 11th, and my principal called me and said, "यार तुम्हारे marks नहीं आ रहे हैं, you are like failing." And I made a deal with him at that time. Sir, your website is very crap. Let me build it with my friend, and I'm really good at it. आप मेरा ये पहला पोर्टफोलियो वगैरह देख लो, and आप मुझे एक मौका देके देखो. तो he saw the portfolio. Some of the students जो उनके रहते थे, प्रिंसिपल के you know about schools में कैसे आगे पीछे घूमते थे लोग, बच्चे तो खासकर, just to build a reputation. So they told him कि यार Shubham is doing something. He used to travel a lot and ask ऐसे चीजें करता था वो. तो my principal agreed कि ठीक है ये डील है, तू बनाएगा and it's okay to school but तू क्लास में करेगा, तू वैसा बैठ के बनाएगा. That was the condition. I said okay. They agreed to that. Yeah, they agreed to that. And I was like done. So I used to sit in the reception. सामने ऑफिस होता था सर का. And I used to bring my own laptop because school provide नहीं करता था. And but वो अपना net provide करते थे. And they used to allocate our computer teacher जो मुझसे आके चीजें पूछती थी ये कैसे करना है. So it was pretty fun just because the knowledge I had at that time was pretty good about development and things, right? So मैंने build करना start किया and it took me 6 months to completely build it. On a very positive side. बैकएंड में अगर देखोगे तो हमने बिल्ड 1 महीने के अंदर ही कर दी थी पूरी वेबसाइट. वी वर जस्ट डिलेइंग इट आउट कि हमें क्लासेस नहीं करनी एंड अपना काम इससे सही चल रहा है. 6 महीने हमने बहुत मजे किया फिर. एंड 6 मंथ हमने इनको दे दी कि सर ये लो आपकी नई वेबसाइट, आपको बस थोड़ा सा पैक खरीदने डोमेन वगैरह का, यू आर गुड टू गो. एट दैट टाइम वी यूज्ड टू डाउनलोड वेरियस गेम्स फ्रॉम द इंटरनेट दैट स्कूल प्रोवाइडेड. एयरटेल का होता था, बहुत फास्ट होता था, हमारे घर में इतना फास्ट नहीं था ना, तो हम कॉल उस पर लगा देते थे डाउनलोडिंग पे. एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू कम डाउन टू द रिसेप्शन एंड से कि नेट यूटिलाइज हो रहा है बहुत ज़्यादा, कौन कर रहा है. एंड माई कंप्यूटर टीचर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मी बाय ऑलवेज सेइंग कि सर बहुत सारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं यहाँ पर, दैट्स व्हाई ये सब हो रहा है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. एंड लेटर जब सर चले जाते थे मान के कि हाँ ठीक है, माय कंप्यूटर टीचर यूज्ड टू कम एंड से कि शुभम तो कुछ कर रहा है ना. तो आई वाज लाइक कि मैम सच सुनोगे झूठ सुनोगे. शी वाज लाइक कि सच बता दो मुझे. तो मैंने कहा मैम देखो गेम डाउनलोड में लगाई हुई है, हमारे घर पे नेट इतना अच्छा नहीं है इसलिए. कह रही तू पकड़ा मत जाइयो और मुझे भी मत पकड़ा दियो कभी. मैंने कहा मैम बिल्कुल यू ट्रस्टेड मी एंड आई एम नॉट गोना लूज दैट ट्रस्ट ऑन दिस पार्ट. So that was my journey. I started one more company into the e-commerce store as well, e-commerce category, and it was more toward about selling stationery items to different schools and second-hand books to different people. तो उसके लिए भी हमने एक छोटा सा ऑफिस सेटअप किया था. वो हमने अपने घर के एक कोने में सेटअप किया था. थोड़े से कंप्यूटर खरीद के लाए थे कि एटलीस्ट काम कर पाएंगे, कॉल कर पाएंगे सब लोगों को. उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा सा अपना इनिशियल कैपिटल पुट की थी. दैट वाज लाइक 40-50,000 रुपीज. वो भी हमने मार्केट से अरेंज करी थी कैसे ना कैसे करके, क्योंकि घर वाले देते नहीं, दोस्त. हाँ, सो देयर इज इंटरेस्टिंग टॉपिक ओवर हियर कि हम लोगों ने क्राउड फंडिंग करने का सोचा था. हमें नहीं पता था उसको क्राउड फंडिंग का मॉडल कहते हैं. व्हाट वी डिड वाज हम लोगों ने लेटर खरीद के लाए हम लोग और हम एनवेलप्स लाए. हमने अपने सारे फ्रेंड्स को हैंड रिटन लेटर लिखा कि वी आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग एंड वी नीड मनी फॉर इट. Okay. And we were pretty sure कि बहुत बदनामी होने वाली है. क्योंकि एक बार वो किसी के पास गया, इट्स लाइक कि वो पूरे स्कूल में बात कर देगी कि शुभम और उसके जो पार्टनर है वो पैसे मांग रहे हैं, राइट, दे डोंट हैव द मनी. वी वर लाइक कि डन, एम्बैरेसमेंट होगी कोई बात नहीं,
but I want to do this thing. So हमने सबको लिखा रात भर में, और मैं सुबह अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी पे जाके सबको लेटर पकड़ाता गया, एंड हमने कहा घर जाके खोलना, यहाँ मत खोलो हमारे सामने. We were like so embarrassed, but we wanted to do this completely. तो वो घर गए, बहुत लोगों ने खोला, lot of people didn't respond back. हमने बोला था कि उसमें लिखा है लेटर में कि आप रिस्पॉन्ड बैक कर देना फेसबुक पे. तो lot of people didn't respond back, which was okay. हमें पता था कैसे होने वाला है. Surprisingly, some of the people send us money. They send us 5,000, 6,000. किसी ने 1,000 भी किए, किसी ने 2,000 भी किए. And those are the people who actually believed in us, right? तो जब फंड रेजिंग होगी ना, एक कॉन्सेप्ट आता है, इन्वेस्टर्स ना टीम के ऊपर पैसा लगाते हैं rather than the idea. So that was my first version of seeing this. Right. Someone else is putting money on me, not on the idea but on me, that I can give good returns to them. उसी में so उस कंपनी का हमने नाम रखा था बैक टू स्कूल. स्टेशनरी एंड सेकेंड हैंड बुक्स वगैरह थी. तो उसी में हम लोगों ने प्रिंटर की कार्ट्रिज फिल करना स्टार्ट की, फोटोकॉपी करना स्टार्ट की, सब कुछ हमने उसमें ही कर दिया स्टार्ट. अब बहुत लोगों को शुरू में बहुत अच्छा रेवेन्यू वगैरह पैसे से मिल रहे थे. लॉट ऑफ पीपल सेड कि उनकी इन्वेस्टमेंट अब वो दे रही है, फायदा दे रही है, दे कैन ऑल्सो गेट अ पार्ट ऑफ इट, द प्रॉफिट. बट अगेन इनिशियल ट्रैक्शन इज नथिंग, इज जस्ट वो इनिशियल पुश ही होता है बस, वो कि लोग आपके प्रोडक्ट को अच्छा लग रहा है या उनको पसंद आ रहा है. उसको कंटिन्यू करने के लिए देयर हैज टू बी processes and various things that you have to do. तो वही हुआ, पैसा गया दोबारा से सबका, हमारा भी गया, but it was really fun and a lot of people didn't ask about money. हमने उसमें लिखा था clearly कि there is a risk involved in it that later, and surprisingly some of these people still hold that later. They used to send me photos कि देख तूने मांगा था, and मैंने कहा हाँ मेरे पास एक्सेल शीट में सबका लिखा हुआ है कि कितना पैसा लिया है मैंने सबसे, and I still have it, but अब तक तो हमने सबको वापस कर दिया सब पैसा. But I still have this Excel sheet where I have mentioned किसका कितना पैसा आया था. Not many people, 4 to 5 people contributed majority of the amount. बाकी फिर हम लोगों ने अपना मार्केट से उठाया था. So that was the thing. Post which I started a agency. That agency blew pretty well. So again मैं कॉलेज में आया था फर्स्ट ईयर के अपने, and I saw demand and supply side. I saw कि जितनी भी small medium businesses है ना, और SMEs हैं, they wanted to come and have an online presence, right? But जो बाकी एजेंसीज हैं, they charge a hefty amount of it. उनको एक वेबसाइट बनानी है, वो 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, which is very dumb, like completely dumb. Being a developer, I think कि वो कॉस्ट नहीं जस्टिफाई नहीं होती है. तो व्हाट आई सॉ कि, और जो हमारे अच्छे डेवलपर्स थे, लाइक मैं भी था, मुझे पैसा कमाना था, और मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे, सीनियर्स भी थे, जिनको जो अच्छे थे डेवलपिंग में, वो हमेशा कहते रहते थे यार पैसा ही नहीं है, अगर कोई कुछ आए तो बताना, ये प्रोजेक्ट आए तो बताना. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट गिव देम मनी, टेक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम देम, सप्लाई इट टू दी SME जिनको क्वालिटी और बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट चाहिए, राइट, एंड जिनको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए. तो मैं मीडियम बना था, मिडिल में, एंड आई क्रिएटेड एन एजेंसी जिसमें हम लोगों ने अराउंड हरियाणा, पुणे, महाराष्ट्र, गुड़गांव एंड दिल्ली के क्लाइंट्स को केटर करते थे. एंड दीज आर लाइक प्रॉपर कंपनी हु हैव बीन रनिंग फॉर पास्ट 30-45 ईयर्स, और जिनको अपनी वेबसाइट बनवानी थी या ऐप बनवानी थी. मैं उनको समझाता था कि नहीं सर, आपको इतना महंगा बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने के लिए हम आपकी वेबसाइट 2 लाख में भी बना देंगे, बट यू डोंट नीड इट. सो दैट वाज आई गेस कि वो ट्रस्ट फैक्टर था जो बिल्ड किया हमारी इनिशियल एजेंसी को, कि उनको लगता था कि वो पैसे नहीं खा रहे हैं, बट हम सामने से गाइड कर रहे थे यूजर्स को, राइट. एंड व्हेन यू गाइड पीपल यू बिल्ड ट्रस्ट, राइट. तो हम उनको बोलते थे कि नहीं, right thing they actually want. मतलब some people actually scam कि अगर उन्हें 50,000 की वेबसाइट चाहिए तो वो 2 लाख की बना के देंगे, which is of use to them, which is just their profit. But when you actually tell them upfront कि इतने की कॉस्ट है, इतना ही आपको जरूरत है, then it actually build trust over time. Right. So and a lot of consumer don't know कि उनको चाहिए क्या. Exactly. They say कि मुझे e-commerce. They rely us. They rely on the experts कि वो बताएंगे. Exactly. So अब मैं उनको बोलता था कि यार बनाने के लिए मैं आपका 15,000 में बना सकता हूँ, और बनाने के लिए मैं आपका 1 लाख में बना दूंगा. But there is a difference to it. There is a quality issue. There is various things. और मैं उन सबको ही थोड़ा बहुत easy to understand चीजों में बताता था.
नॉट इन अ टेक्निकल फैशन बट इन अ फैशन जो उनको समझ में आ जाए नॉन टेक लोगों को. एंड दे लाइक्ड इट, दे वेरी मच लाइक्ड इट. दे सेड कि ठीक है हम करेंगे आपके साथ. एंड दे यूज्ड टू पुट अ एडवांस. अब फ्रीलांसर्स में क्या था कि एडवांस नहीं मिलता था, राइट. बट जब मैंने क्या था एक क्या कहते हैं वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर ली, people were very happy to give me 50% of the advance to start the initial project. And I used to do this on milestone basis. कि सर आपका ये माइलस्टोन हिट होगा, इतना पेज बन जाएगा वेबसाइट का, ये कलर हो जाएगा, तो आप बाकी का पैसा देना, वरना मत देना. तो these were the measure that I taken just because I saw कि बहुत लोग ये चीज़ नहीं कर रहे थे, right? And वो कस्टमर एक्सपीरियंस आज तक मैं सॉफ्टवेयर में वो चीज़ करता हूँ कि I don't want to destroy the customer experience. मैं कुछ भी बिल्ड करूँ, I want to give an experience जो आप याद रखो. A lot of the clients still call me till date, say कि Shubham, are you into that business? I want to make a project, I want to give you a website. And now the website costs 5 to 6 lakh rupees. They are happy to give that project to me. But I have to decline just because I have prior commitments, software and everything else, right? So that was a relationship that I built. The retention I had was like 100%. Every client used to come back again and again for the service. But later, so we grew it to around 15 to 16 team members. These are guys who are like good at what they did. Front end तो front end भी बहुत अच्छे लगते हैं, back end तो back end के अच्छे लगते हैं. And ऐसे करके मोबाइल ऐप वगैरह हमने थोड़े सेगमेंट्स बढ़ा दिए थे, अपने कैटेगरी एस्टैब्लिश कर दी थी. And now we were getting good traction, good money. सबकी नीड्स भी satisfy हो रही थी और सबका काम चल रहा था. But now the problem was, it was very boring for me. Because now, being a curious person, मेरे पास कोई काम नहीं होता. I just have to close the deal, right? It was repetitive. And वो वही सेम चीज चलती थी. And I used to close it. And it was a challenging था उसमें कोई, right? हाँ आता था and वो convert हो जाते थे लोग and it was like done. So I saw कि ये नहीं होने वाला मेरे से, मैं इसको continue नहीं रख सकता. So I called my partner. I said कि this is becoming very boring for me and I can't do it. This is not the purpose that I lived to, right? Which was to create an impact. Right? And they said कि तू पागल हो गया है. And I was like कि शायद I don't know, but ये तो नहीं करने वाला. तुम्हें कमाना, तुम कमाओ पैसा, take this company and move it ahead. तो मैंने step down कर लिया था उस company से. And my partner still used to run it. The company is called the Complete Web Solution. अभी भी दिल्ली में ऑपरेट करते हैं. They are doing well. But I stepped down. I said कि तुम ही रखो पूरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस. If you want to give me a position, if you want to give me any compensation, it's good. वरना वो भी नहीं चाहिए मुझे. But I'm done with this. That's where in that time period ना मैंने companies को consult करना start किया on their tech stack. कि basically startups ही थे कि आप ये सही नहीं कर रहे हो. This is not how things become scalable. अब इतने सारे प्रोजेक्ट कर लेते, इतने सारी टीम्स को हैंडल कर लेता. सो इन दैट थिंग ना हम लोग यूएस की टीम्स को भी हैंडल करते थे. तो अपना नेटवर्क इतना अच्छा हो गया था कम्युनिटीज वगैरह में जा जाके, इवेंट्स में जा जाके, टेक इवेंट्स वगैरह, कि यूएस की टीम्स होती थी, इंडिया टीम होती थी, पाकिस्तान की टीम होती थी. एंड दे यूज्ड टू कम एंड बी लाइक कि हमें भी प्रोजेक्ट दो, हमें प्रोजेक्ट दो, राइट. सो दैट्स हाउ आई बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ डेवलपर्स अराउंड मी कि सबको काम मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, साथ रहो, राइट. So I used to be like कि 4 बजे मीटिंग हो रही है, 2 बजे रात को मीटिंग हो रही है, क्योंकि यूएस वगैरह की टीम तो उनका तो दिन होता था वहाँ पर और हमारा रात होती थी पूरी. घर वाले भी बोलते रहते थे तू क्या कर रहा है ऐसा, पता नहीं किन चीज़ों में लग गया है, ये सब वो सब. और लाइक कि ठीक है थोड़ा चिल करो. उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सब कुछ हैंडल हो रहा था. दैट you were in college while doing all of this? In my first year of college. Okay. So that's where a lot of companies came forward to me asking about tech consultancy कि हमारा सॉफ्टवेयर बन नहीं पा रहा या स्केल नहीं हो पा रहा, there's a problem in this stuff. So I started doing that as well. So मैं HR interviews में भी बैठा. I used to be the person who used to hire people at a very young age. No, I did various interviews. I used to sit with various HRs. That's where I built a company which was revolving around HR tech consultancy थी वो भी पूरी. You were helping people how to hire good talent, non-tech में भी, tech में भी, और मैनेजमेंट वगैरह तो सब चली थी उस टाइम पे. So वही बात आई दोबारा से कि वो बोरिंग होने लगा दोबारा से. It was not really fun, right? स्टार्टिंग में challenges क्या थे कि ये टेक्नोलॉजी स्केल नहीं हो रही है, right? और we can't manage these people, these developers, ये हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं बन पा रही है.
So after the time आप उसको solve कर देते हो, there's nothing much you want to do, right? क्योंकि आपने process build कर दिया उस चीज़ का, अब वो process से ही चल रही है चीज़ें. फिर वो corporate culture बन जाता है कि आप बैठे हुए हो और हाथ हिला रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर. So I was like यार ठीक है, I know how to manage people, I know how to build tech, right? I know how to retain talent as well. But ये नहीं करना कुछ और करेंगे. So that's where हमने अपनी कंपनी बिल्ड की थी सॉफ्टवे टेक्नोलॉजी. तो सॉफ्टवे को अराउंड 13 to 14 अवार्ड्स मिले थे विद इन स्पैन ऑफ एन ईयर. एंड लेटर लास्ट हम लोगों ने हमें जो अवार्ड मिला था दैट वाज लाइक टॉप 10 मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर. इट वाज अ वेरी promising company, promising product that we were building, but the problem was we didn't raise any money at that time. सबको ये था कि 20 साल का लड़का क्या कर लेगा. Every investor has this insight कि 20 साल में तुम क्या कर लोगे. And we were the first company who introduced the concept of offline payment. Offline payment ऐसे था कि आप बिना नेट के किसी को भी पे कर सकते हो आसपास में. एंड उसके बाद NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सब कुछ एसेंशियली हैंडल करती है UPI, रुपे कार्ड वगैरह, वो लेके आए थे अपनी लाइब्रेरी फॉर ऑफलाइन पेमेंट्स. So we were the pioneers in offline payments at that time, and everyone saw this. The NPCI director congratulated me on this, on the achievement that we had. So मेरी major journey corporate building a startup came forward with this. जहाँ पर हम लोग पैन इंडिया घूमे, हर जगह जाते थे, हर एक शोकेस करने के लिए प्रोडक्ट एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर एट दैट टाइम. बट हम जो चीज़ प्रूव नहीं कर पाए थे दैट वाज द कमर्शलाइजेशन ऑफ द डिवाइस. अभी हमारा डिवाइस फिंगरप्रिंट पे बेस्ड था. इट वाज अ बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम. तो जब भी आप क्लिक करते थे तो वो आपका पेमेंट वेरीफाई कर देता था. आपको अपना कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको कुछ नहीं करना पड़ता था. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड द पेमेंट विल गेट प्रोसेस्ड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और जो भी आपने लिंक कर रखा है. तो मेजर चैलेंज आया, पैंडेमिक आया, लोगों ने छूना बंद कर दिया चीज़ों को, राइट. पहला पॉइंट ऑफ फेलियर वो आया, बट हमने उसको पिवट किया. हम लोग टचलेस डिवाइस पे आ गए. टचलेस डिवाइस ऐसा था कि आपको सिर्फ हाथ होवर करना पड़ता था अपना, एंड वो आपको वेरीफाई कर लेता था आपके पैटर्न की वजह से, एंड यू आर गुड टू गो. बट द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ वाज वेरी कॉस्टली. तो मेरा पहला एक्सपीरियंस फिनटेक के साथ वो था 3-4 साल पहले. एंड उससे पता चला कि जो कॉस्ट होती है किसी चीज़ को ऑपरेट करने की फिनटेक में, इट्स वेरी हाई, पर जितना आप रेवेन्यू निकाल पाते हो उन चीज़ों से इट्स वेरी लो. दैट्स व्हाई कंपनीज लाइक पेटीएम और एनी अदर फिनटेक कंपनी, फोन पे, भारत पे वगैरह, दीज आर लॉस एट लॉस. बिकॉज आपका बेस कितना ही बढ़ाओ, आप इतना सा ही निकाल सकते हो. बहुत छोटा सा पार्ट होता है रेवेन्यू के उसमें, और जब तक आपके बहुत बड़ी बैकिंग नहीं है, यू कांट डू दिस, राइट. So we understood that we thought कि जो actual hardware भी बन रहा था ना, कि if they are loss making companies, how they are still operating on a scale level. मतलब I know they have brand, they have user base, but how they are meeting the needs, and मतलब the raising money is the only solution out there, or like how it actually works on the back end. So these companies have became full stack in the sense कि हमें लगता है कि ये सिर्फ पेमेंट यहाँ से यहाँ भेजेंगे, right? But if you go under them, no, they are a very huge market. उन्होंने lending में business build कर लिया, उन्होंने finance में build कर लिया, उन्होंने peer to peer lending में build कर लिया, उन्होंने बहुत कुछ build कर लिया. पर हमें क्या दिखता है कि सिर्फ एक जगह से पैसा आ रहा है, इधर जा रहा है, right? और जो बाकी का revenue वो generate करती है कंपनी. Let's suppose Paytm generates roughly around 2,000-3,000 crore rupees from these things. Even recharge करते हो आप Paytm वगैरह पे भी, तो उसका वो चार्ज करती है फी. Not from you, but from the companies जो Paytm पे listed है, जो भी ऑपरेटर Paytm पे आके कर रहे हैं. That's the primary business model of these companies, क्योंकि वो कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, राइट. अब वो 2,000-3,000 करोड़ कमा रहे हैं, वो उसको सप्लीमेंट कैसे करते हैं? फंडिंग अमाउंट से. लेट्स सपोज आपका पूरा बर्न 5,000 करोड़ का है साल का, ठीक है. आपको 2 या 3,000 यहाँ से मिल गए, आपने 2,000 की फंडिंग उठा ली और आपने कंबाइन करके 1 साल पूरी कंपनी चला ली. तो एवरी कंपनी दैट इज रेजिंग मनी एसेंशियली, अगर उनका रेवेन्यू है तो वो अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट, अपनी मेजर कॉस्ट वो अपने रेवेन्यू से निकाल देती है. लॉस मेकिंग है पर वो रेवेन्यू कमा रही है, और इतना नहीं कमा रही कि वो अपना पूरा लॉस कवर कर पाए, और इसलिए फंडिंग ली जाती है वो लॉस को कवर करने के लिए. And then it gets repetitive over the years. Right. So now what happens is कि
देखो आपका एक्सपेंस नहीं बढ़ता कभी, एक्सपेंस बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ता है। अभी 5,000 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर वो 5,100 करोड़ हो जाएगा, लाइक 5,100 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, इतना ही बढ़ेगा वो, इससे ज्यादा नहीं होता। बट आपका जो बेस है, कस्टमर बेस है, या आपकी जो पावर है जिससे आप लोगों से चार्ज कर पा रहे हो, वो बढ़ जाती है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। अब आप 3,000 करोड़ पे थे, अब आप 6,000 करोड़ पे हो, सीधा आपने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली, क्योंकि आपके पास उतना टाइम आ गया उस फंडिंग के थ्रू कि एक साल में आपने अपने यूजर बेस डबल, ट्रिपल या क्वाड्रुपल कर लिया, और आप उतना पैसा जनरेट कर पा रहे हो आपकी कंपनी कि आपकी वो सारी नीड्स पूरी हो पा रही है। तब तक जब तक नहीं होती तब तक सब फंडिंग सप्लीमेंट करती रहती है उसको। दैट्स व्हाई कंपनीज बार बार लेती रहती है पैसा, कि अब रेट इतना कर लिया, अब रेट इतना कर लिया। Got it. मतलब इसलिए वो multiple rounds of money raising funds होते हैं. Right. Seed, Series A, Series B, Series C, D, F, Z, IPO तक चलता रहता है। IPO के बाद भी नहीं हो पाती तो IPO के बाद भी लॉस मेकिंग में रहते हैं जोमेटो जैसे। बट जोमेटो हैव अ क्रिटिकल पॉइंट कि 1-2 सालों के अंदर वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी बाय कटिंग कॉस्ट, बाय डूइंग एवरी सॉर्ट ऑफ मेजर जो उनको लगता है कि कर सकते हैं वो कंपनी के अंदर। अनअकैडमी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कि IPO से पहले प्रॉफिटेबल होना है, तो वो 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। फाउंडर्स ऑलरेडी सैलरी कट कर चुके हैं, कंपनी कोई फालतू की चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं कर रही है, खाना फ्री में नहीं मिल रहा है अकेडमी में किसी को भी। ये सब चल रहा है इकोसिस्टम में, क्योंकि फंडिंग विंटर्स है। बट फंडिंग विंटर्स छोटे स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, बड़े स्टार्टअप्स के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा चाहिए। राइट, किसी कंपनी को 30 मिलियन 50 मिलियन भी रेस करना है, वो नहीं कर पाएगी फंडिंग विंटर्स में, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट को देने को रेडी नहीं है। बट कोई कंपनी लेस देन $1 मिलियन रेस कर रही है तो वो लोग हैप्पीली लगा रहे हैं उसे। तो ये भी कंसेप्शन चल रहा है कि फंडिंग विंटर है, तुम रेस कैसे करोगे। फंडिंग विंटर सिर्फ बड़े कंपनीज के लिए है, छोटी कंपनी से कोई वो नहीं हो रहा। छोटी कंपनी अभी भी रेस कर रही थी, पहले भी कर रही थी, आज भी करती रहेंगी, इवन चल रहा है अभी भी। बट ये कि जो साइकिल फंड्स की थी वो कम हो गई है इकोसिस्टम में, क्योंकि कोई लगाना नहीं चाह रहा पैसा। राइट। Okay, Shubham, thank you so much for explaining your journey to us. It has been like, I was actually living those journey ki as a school student and then college, then doing so much of things. So yeah, eventually how you landed on StockPay and got that idea to make people learn investing in a fun way and a competitive way. So how was it? So after selling StockPay na,